अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है BZU पास्ट पेपर्स की, तो उसी सीरीज़ में से एक वीडियो है। तो चले स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा है लेक्चर ये होगा फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ का जो पास्ट पेपर्स है उसके ऊपर। तो जी पहले हम देखेंगे MCQs पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ यूटिलिटी वाज प्रेजेंटेड बाय जेरमी बेंथम। Sources of law were clarified by Salman Keaton. Summa Theorica is an book written by Thomas. Philosophy of positive law described by John Austin. Philosophy is the mother of all laws. Law is a command of sovereign. Backed by sanction आपको याद होगा. Law set by God to his human creature is called natural law. Lex extrema is the ordinance of divine wisdom of universal governance. Legal realism was analyzed in United States by Holmes. This ordinance between law and fact may arise because of fiction of law. Aristotle was Greek philosopher. Dash is the theory stressing that law is practice of quote legal realism. The fair and equitable distribution of right is called justice. Generally, laws are divided as substantive and procedural. Homosexual, same-sex marriages, and martial infinitely offend the principle of critical legal theory. Dash claimed that there is no possible connection between law and morals. Positivist H.L.A. Hart declared law as a social norm. Pure theory of law was brainchild of Henry Kelsen. Law is a codified document. Any statement pertaining to the nature of reality is called philosophical statement. अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नंबर फर्स्ट पे व्हाट इज़ फिलोसफी एंड इट्स रिलेशन टू लॉ। नरेट योर आंसर इन द लाइट ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ। एक्सप्रेस योर व्यू ऑन नेचुरल एंड मॉरल लॉ इन द लाइट ऑफ डिफरेंट लीगल jurists. How civil law is different from criminal law, and why criminal law has been declared as public law. Define legal positivism and how a student of laws answer the question. What is law? According to Austin and Hobbes. Must law be moral? Discuss and debate comprehensively. What are the principles of source of law? What do you really know about the definition of application of rule of law? अच्छा, आपको मैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो है ना वो भी मैं बताता चलता हूँ कि कौन कौन से करने हैं आपने। जो आपका चैप्टर 1 है लॉ का, और जो चैप्टर आई थॉट 12 है रूल ऑफ लॉ, और थ्योरीज़ है। थ्योरीज़ में से आप क्रिटिकल थ्योरी रहने दीजिएगा, उसका इतना कोई इशू नहीं है, वो आपको इसी में क्लियर हो जाएगा। और सोर्सेज ऑफ लॉ जो है ना वो आपने करने हैं। इसके बाद दूसरे पेपर पे चलते हैं। लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। अकॉर्डिंग टू हार्ट, this idea at the core rule of right. A society is an association of people. It grew out of necessity to remove deficiency in the common law, equity law. A court is bound to answer in accordance with rule of law. Question of fact. It is not predetermined by a rule of law. Question of fact. A rule which prescribes general course of action imposed by some authority. अच्छा, अगर समटाइम्स ना मैं आपकी ये बात काट रहा हूँ, ये लेक्चर भी काट रहा हूँ, तो समटाइम्स ऐसा होता है ये जो MCQ होते हैं ना ये उल्ट करके दे देते हैं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की जगह ये क्वेश्चन ऑफ लॉ का पूछ लेते हैं। अ रूल विच प्रिस्क्राइब जनरल कोर्स ऑफ एक्शन imposed by some authority, imperative law. It is based on the principle of right and wrong. Moral law, set of rules that are outcome of an agreement.
between person. Conventional law. It regulates the relation between person and state. None of these. It is not a legal person. Man is not a legal person. Positive movement could start with the 19th century. It is called the left wing of functional school realist movement. A connection of law in flux and of judicial realist approach. Henry Maine is main exponent of historical school. It is an advantage of law, peace and society. International law mainly deal with matter of state. It is a source of law. कॉन्स्टिट्यूशन भी है इसमें सोर्स और प्रेसिडेंट भी है सोर्सेज ऑफ लॉ में आपने देखा होगा मैंने वीडियो अपलोड की थी इट इज़ अ मैटर ऑफ सिविल लॉ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफेमेशन बोथ इट इज़ रेलिवेंट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर क्रिमिनल लॉ इंटेंशन इसके क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ लॉ इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन में आपको इसका शो हो जाएगा सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ ठीक है ये भी आपको दे दूंगा ये मैंने वीडियो बनाई है काफ़ी डिटेल से व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ ये भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है फिलोसफी ऑफ लॉ वाले चैप्टर लिस्ट में तो व्हाट इज़ लीगल रॉन्ग एवरीवन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ ये रूल ऑफ लॉ इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी What is the role of law in society? Please discuss advantages and disadvantages of law in this regard. So last में है write a short note on law as a command, sovereignty, new Austrian school. ओके इसके बाद हम देखते हैं जो लास्ट वन हमारा पेपर है तो वो है सिजारो वाजा रोमन जूरिस्ट कस्टम इज़ अ वैलिड सोर्स ऑफ लॉ बिल्कुल ठीक है लीगल रियलिज्म इज़ द थ्योरी ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ विच लॉ इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट एरिस्टोटल वाज अ Greek philosopher according to the John Austin the subject matter of jurisprudence is positive Hugo Grotius was a naturalist with What law is called matter of law and all other law of land are subordinate of law. Constitutional law. A contract is a part of civil law. In the administration of justice and crimes are called public wrong. Every right has a corresponding duty. Right. Establish social practice which is legally binding being incorporated in contract between the parties called conventional custom कन्वेंशन के वैसे मतलब जो है ना वो जहाँ पे भी आपको कन्वेंशन नज़र आएगा ना उसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट डैश वाज पॉजिटिविस्ट जॉन ऑस्टन सिविल लॉज इंक्लूड जनरल और स्पेशल लॉज according to Solomon the fifth element of a right is called is title. The dash is considered as the oldest form of law custom. Authoritative and persuasive are the kind of precedent. The word law is derived from Latin word lex. Kind of subordinate legislation are 5. There are theories. How many theories of punishment? 10. Religion is not considered as a source of law. False. अच्छा जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो से मैंने चैप्टर्स आपको बताए थे वही बार बार रिपीट हो रहे हैं और वही एग्ज़ाम्स की नज़र से ना बहुत इम्पोर्टेंट है वो फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ चैप्टर नंबर 1 रूल ऑफ लॉ वाला चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर एक तो लॉ है लॉ वाला चैप्टर एक रूल ऑफ लॉ वाला चैप्टर है और उसके बाद थ्योरीज़ हैं जितनी भी और सोर्सेज ऑफ लॉ क्रिटिकल थ्योरी जो है ना वो रहने दीजिएगा क्रिटिकल और वो जो दूसरी है लीगल रियलिज्म वाली वो रहने भी देंगे उसका कोई इशू नहीं है वो आपकी कवर हो जाएगी और लीगल राइट्स का भी रहने दीजिएगा तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं शुक्रिया जज़ाकल्लाह